हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब। आप भारत के फॉर्मर डीजीएम रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मुझे शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू जीवा जी, आपके प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, अच्छा लगता है, बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने को मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें सीखने को मिलता है, सारे जितने भी यंग लोग स्टूडेंट्स हैं भारत में, पाकिस्तान में, दे लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम यू एंड पीपल लाइक यू, जिनका इतना एक्सपीरियंस है। सो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। थोड़ी डिस्कशन, सारी बात आपके साथ स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे होती है। सर, द फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो पूछना चाह रहा था, अभी हाल ही में सर द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया था that India is basically Prime Minister Modi के बारे में था, that he is remaking 1.4 million army. ये जाहिर बात है, इसे बहुत बड़ी टर्म है, इज रीमेकिंग 1.4 मिलियन आर्मी। आप क्योंकि जाहिर बात है बड़े अहम आपने सर्व किया है, why is there need for remaking an army? India has a nuclear weapons, India has missile program, इंडिया के पास पाकिस्तान से बेटर कन्वेंशनल सुपरियॉरिटी मौजूद है, फिर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल होना, इतनी बड़ी फौज होना। सो व्हाई इज दिस सेंस ग्रोइंग इंडिया के अंदर, मे बी, एंड द वर्ल्ड इज आल्सो रियलाइजिंग दैट इंडिया नीड टू रीमेक एन आर्मी? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, ऐसा है, व्हेन यू टॉक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जिसको हम कहते हैं, दैट इज डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, डाइन। उसको मैं दो और ऐड कर दूंगा, विच इज बेसिकली पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल। तो जब वो टाइम की बात करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, मिलिट्री इज वेरी इंटीग्रल पार्ट जो है ना, जिसको कहते हैं फॉर नेशनल पावर। एंड टुडे इंडिया, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ऑन योर प्लेटफॉर्म, आई यूज दिस वर्ड्स, इंडिया टुडे इज अ रिजन रिस्पांसिबल रिसर्जेंट नेशन। एंड इफ वी हैव टू grow in this emerging world order and find a rightful place democracy in the world, for the largest population in the world, we need to be backed by the essential element of national power, which is diplomacy, military, and economy. Economy, we are doing reasonably well. I think diplomacy has taken a leap forward. And as the military is concerned, it needs to be refurbished, reinforced, backed by reforms. हमारे जो कई के सिस्टम्स है, हमारी बेसिक जो मिलिट्री की वीकनेस है वो है कि हमारे पास सेल्फ रिलायंस नहीं है। मेन वीकनेस हमारी, बाकी कोई वीकनेस नहीं हमारी। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, एक कहते हैं ना मिलिट्री टर्म्स में, अश्योर रेसिपी फॉर विक्ट्री। अश्योर रेसिपी फॉर विक्ट्री में कहते हैं यू नीड ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस, you need American technology, German generals, and you need, when I say India, I also mean Pakistan in that. India, Pakistan, जो आर्मी के जो हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, the manpower, and you know Italian enemy, right? So when we talk of that, we have the best armed forces in the world. We are the second largest army in the world, the largest voluntary army in the world. We are the third largest air force in the world, the fourth largest navy in the world. But we have certain weaknesses, and one of the major weaknesses, or two of the major weaknesses, is the imports of weapon systems. We are not self-reliant as yet, and integration. So that is where the focus of the reforms are. Basically, Atmanirbhar in defense manufacturing and integration of the three services plus other domains. सर, ये जो आपने इंटीग्रेशन की बात की, तो इट बेसिकली स्टार्टेड जब जो फॉर्मर सीडीएस थे, वो जब उनको हुआ, तो वो उसके बाद रुक गई है। डोंट यू थिंक रुक गई है, कोई उस पर डेवलपमेंट नहीं हो सकी? अभी जो नए सीडीएस, आई थिंक चौहान सर जो हैं, मतलब ही हैज बीन इन, वो कोई ज़्यादा लीप फॉरवर्ड नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? क्योंकि एट मेनी पीपल इन इंडिया थिंकिंग कि भाई दुश्मन तो हमारे सर पे आ गया, मतलब इस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान को तो समझते हैं ट्रेडिशनल है, तो खैर है, इट्स ओके, वी नो ईच अदर्स वीकनेसेस, प्लस माइनस का पता है हमें क्या है। and for that matter, India is building a lot of military, has bought a lot of military hardware, S400, so and so. So ये जो integration ना होने की वजह है, ये largely is a political question or is a technical military question in Indian sense? I'll be very honest with you. It is not a political question. Political में आप देखिए, I think it was 2018 or 19, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से बोला था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आएंगी।
18 में। उसके बाद जनरल बिपिन रावत 3 साल दिए गए थे, बट इट इज नॉट इजी। इफ यू लुक एट इट, इंटीग्रेशन या तो चाइनीज मॉडल फॉलो करो आप, जिन्होंने मतलब हुक्म दे दिया ऊपर से, चाहे बीच में अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी नीड अ ट्रांजिशन मैनेजमेंट। लाइक यू राइटली सेड, हमारे दरवाजे पे एडवर्सरीज खड़े हैं, राइट? चाइना खड़ा है नदर बॉर्डर्स पर, तो वी नीड अ ट्रांजिशन वेयर वी नीड टू बी प्रेजेंट, रेलिवेंट एंड फ्यूचर रेडी। तो इसमें टाइम भी लगेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस बहुत है हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में रेजिस्टेंस बहुत टू चेंज, विच इज नॉर्मल ऑल्सो। मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा। वैसे हम सब ना बड़े हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, सब वी रीड इंग्लिश ना, सो वी आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन इन फॉरेन मैगजीन्स, स्पेशली वेस्टर्न मैगजीन्स, अमेरिकन मैगजीन्स, सबके सब, मतलब इवन आई एम पार्ट ऑफ दैट। तो वी टॉक ऑफ गोल्ड वाटर निकलस एक्ट, हाउ द यूएस आर्म्ड फोर्सेस गॉट इंटीग्रेटेड ऑल दैट। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। आई वाज द को-चेयर ऑफ द ईएसजी, द एक्सपर्ट स्टडी ग्रुप। तो मैं हवाई गया हुआ था मीटिंग के लिए, तो आई वाज मीटिंग द पैकॉम आर्मी। तो वो काफी बिजी थे, तो मैंने बीच में बोला, यार थोड़ा मुझे गोल्फ खेलना है। तो उनके फोर्थ शिफ्ट में गोल्फ खेल रहा था मैं। तो देयर वाज अ जनरल वाज विद मी प्लेइंग, कहता है, सर द नेवल गोल्फ कोर्स वेरी गुड। आई सेड, बट व्हाई डोंट यू प्ले देयर? कहता है, डोंट लेट द आर्मी प्ले। तो देखिए, मैं ये कोट कर रहा हूँ आपको। अगले दिन मैं नेवी वाले के पास गया, जो पेकॉम नेवी था वहां पर, तब पैसिफिक कमांड बोलते, इंडो पैसिफिक नहीं बोलते थे तब। तो कहता है, जनरल, आई बिलीव यू आर एविड गोल्फर। आई सेड, नो, आई एम नॉट एविड गोल्फर, बट आई लाइक टू प्ले गोल्फ। ही सेड, प्ले ऑन द नेवल कोर्स, वेरी गुड। So I told him, I said, but you don't let the army play there. कहता, that's the US Army, not the Indian Army. तो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, it is anecdote, but anecdote gives itself for this thing that integration is not easy to achieve. और हमारे प्रॉब्लम तो अलग है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको तो प्रेजेंट रेलिवेंट भी होना पड़ेगा ना। So there is confusion, but I'm sure we have started moving towards the direction. There is a political will, there is a political direction, but we should get the structures right. जल्दी टाइम की कोई कमी तो नहीं है हमारे पास, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने कल करना है ये, but whenever we do it, we should get the structures right. It should be optimal structures. It should also, we are not a rich country, like our defense budget तो limited है, हमारा बहुत limited है, so we have to optimize the defense budget also. So it has to be within that. So there are a lot of hitches, but the fact is that we are discussing, we are deliberating, and I'm sure the people today in the in the decision making much smarter than me, much better than me, and they'll come out with good structures as they come out. सर बिल्कुल आपने वैसे टाइम की बात की, लेकिन many people in India say कि looking at Chinese aggressive postures, टाइम भी कम है, but anyhow इस पे I can move on. मैं disagree with you. और अब चाइनीज को देखिए, उन्होंने बोला 2020 तक ये करेंगे, but उनकी यूनिट्स रोल डेफिनेशन अभी तक नहीं है। ये चाइना forces everything from the top. You have to have a bottom up approach and a top down approach. सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यूनिट्स जो हैं, फॉर्मेशंस हैं, एंड मिलिट्री इज अ वेरी वेरी, मतलब बहुत ही, वो क्या कहते हैं, इतना बड़ा वो मॉन्यूमेंट है, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है किसी को भी, किसी मिलिट्री को भी, ठीक है? तो ठीक है। उनके रोल डेफिनेशन नहीं है अभी तक, दैट इज द प्रॉब्लम। जल साहब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने बात की कि यू स्पोक अबाउट द सेल्फ रिलायंस, बिकॉज हम रीमेकिंग की बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की। तो सर सेल्फ रिलायंस में जारी बात है, आपने कहा इतने पर भारत की जिक्र किया कि यू वांट टू बिल्ड इंडिजिनसली एंड ऑल दैट। हमने एक चीज़ नोट की है कि इन ऑल दीज ईयर्स हमने चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट देखा है, पाकिस्तान ने भी जारी बात है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इंडक्ट कर रहा है, बट उसका क्वेश्चन रिलायबिलिटी का आता है कि वही रिलायबल नहीं है एंड वॉर टेस्टेड नहीं है, टाइम टेस्टेड। यू हैव बीन योरसेल्फ अ डीजीएमएन, यू नो कि कौन सा वेपन भाई चलेगा, किधर होगा। तो सर ये जो टाइम टेस्टेड नहीं होते, तो फॉर एग्जांपल इंडिया इज आल्सो इन दैट प्रोसेस कि फर्स्ट द थिंग इज कि यू हैव टू इंपोर्ट एज यू मेंशन्ड मच, वन थिंग। सेकेंडली, इन केस अगर आपके पास वो जो सेल्फ रिलायंस नहीं है, एंड देन राइट नाउ इंडिया मे बी यूजिंग आई थिंक द अमेरिकन, वेस्टर्न, फ्रेंच, इजरायली वेपन सारा वो कर रहा है। तो ये जब क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो वेपन बनेगा, तो वो डू यू बिलीव, जैसे रिसेंटली एक इशू हो गया था कि वो एक मिसाइल छूट गया था इंडिया की तरफ से, सो ये जो चीज है, हाउ इट इज गोइंग टू कोप अप, बिकॉज अगर चाइनीज मिसाइल इतनी, उन्होंने तो इंडिया से पहले काफी काम करना शुरू कर दिया इन सेल्फ रिलायंस, तो आज तक ना तो वो वॉर टेस्टेड है, ना वो उसको किसी मुल्क ने बड़ा खुशी खुशी से वेलकम किया है।
So do you believe it's a long process, or do you believe that the support which is coming from the West that will make self-reliance fast, quick, and plus reliable? देखिए, देयर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। कोई आपको मुफ्त में कुछ नहीं देगा। हाँ, जो देगा वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश जरूर निकालेगा, चाहे yes, कोई कोई कंट्री क्यों ना हो। तो yes. फॉर टू लॉन्ग वी हैव डिपेंडेड ऑन द सोवियत ओरिजिन इक्विपमेंट। हमारे इक्विपमेंट रशिया का ही नहीं है सिर्फ, हमारे इक्विपमेंट यूएस का है, इसराइल का है, फ्रांस का है, यूके का है। आप बोलिए कहाँ का नहीं है? यू नो, इट इज खिचड़ी है पूरी। उस खिचड़ी में भी हम उसमें भी खुश हैं, हम Mhm. कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फोकस आत्मनिर्भरता का है, मतलब वी एज इंडिया कैन नॉट बी स्ट्रेटेजिक। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ से आएगी हमारी, जब हमारा 60% इक्विपमेंट हमारा इम्पोर्टेड है? तो मैं तो क्वेश्चन करता हूँ इस चीज को, और हमें करना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन अभी जो धीरे धीरे मूव चल रहा है सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी ऑल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था, तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारे इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर, जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो, एंड सेम को था पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, Hmm. सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को भेज दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। सो दैट इज आवर दिस थिंग। सो बट वी आर वेरी वेरी चूजी अबाउट थिंग्स। तो अभी जो हमारा जो एनकरेजमेंट हो रहा है, इंसेंटिव दे रहे हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं, इट इज दैट सेल्फ रिलायंस विल टेक टाइम, बट विल बी देयर। मैं तो आज से 4-5 साल पहले जब काटसा का चल रहा था ना, S-400 हम ले रहे थे रशिया से, तो अमेरिकन बोलते हैं काटसा लगा देंगे आप पे। तो मैंने एक दिन उनको बोला, मैं आप काटसा लगा दीजिए, हम भी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, जैसे हम स्पेस में हुए हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी में हुए हैं। आप लगा दीजिए, आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद सेल्फ रिलायंट हो जाए। मैं तो कहता हूँ आप काटसा लगाइए, हमको कुछ मत दीजिए आप। सो देयर आर एडवांटेजेस। आज काटसा लगा नहीं उन्होंने, क्योंकि द अमेरिकन इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स द यूएस। सही। देखिए, बात तो एंड में पैसे की आती है ना पूरी। हाँ, पैसे के। अगर हम मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है ना। इंडिया, बल्कि वह पिछले 20 साल में 10 सालों में ये कितने 2016 ऑनवर्ड $20 बिलियन से ज्यादा का वेपन इंडिया जो है वो 20 बिलियन डॉलर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 20 बिलियन डॉलर इज नॉट बिग, इज बिग मनी। बिग मनी। सही But कह we रहे realized after the Russia-Ukraine war, especially now with Israel, Hamas, what is going on, we realized that we have to be self-reliant. मतलब उसमें हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कोई। And fortunately, the systems are in place. The private public partnership is in place. हमने अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को हमने उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, हमने डीपीएसयूज को कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। लॉट ऑफ गुड स्ट्रक्चर चेंजेस है कॉम, बट चेंज में टाइम लगता है हर चीज। ठीक है, सपोर्ट कर दिया है, एक्सपोर्ट हमने खोल दिए हैं। जो एफडीए आते थे पहले 49% 74% कर दिए एफडीए को। तो थिंग्स आर मूविंग द राइट डायरेक्शन। वी हैव अ indigenous positive list. We have stopped import of over 940 odd systems. So it is not only, there are two-way strategy. One strategy is to start making the military hardware. And second strategy is to stop importing the spares and components. It is not only hardware. Hardware तो मैं बना दूंगा, उसके support system चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसकी, वो सब देखना पड़ेगा आपको। बट अगर हम सोचें कल को हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा चीज को। बट वी आर एक्चुअली मूविंग द राइट डायरेक्शन। आई एम वेरी पॉजिटिव मैन। मतलब वी विल डू इट, विल टेक टाइम। हमारे सिस्टम ऐसे हैं, हमारे तो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, पे लेना चाहते हैं। मतलब एवरी पब्लिक सेक्टर इज लाइक दैट कि अगर मैं काम मिली मैं काम क्यों करूं, बताओ। काम नहीं करता हूँ। दिस इज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हर जगह ऐसे ही है। इंडिया में भी ऑब्वियसली इज नॉट डिफरेंट। सर, मूविंग ऑन, ये जो अभी सर रिसेंटली हमने देखा है कि द अमेरिकन्स, वो अमेरिकन्स ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अनाउंस की, बड़ा वहाँ पर टाइम सारा, एंड देन बीच में यूक्रेन आ गया, वो सारे वहाँ बिजी हो गए। बीच में ये मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस आ गया वेस्ट एशिया में एंड ऑल दैट। यू बिलीव कि ये जो सारी अटेंशन है वेस्ट अमेरिका की, पर्टिकुलरली नॉट आई शुड से वेस्ट, ये जो अमेरिका की जो अटेंशन है इंडो पैसिफिक से हट गई है, और डू यू बिलीव के स्टिल दे हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज
मैकेनिज्म चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, इट वॉन्ट अफेक्ट। एंड एट द सेम टाइम इस पर ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था वी डोंट हैव एनी ट्रीटी इन दिस क्वाड, वी जस्ट हैव कोऑपरेशन। सो ये जो चीज़ है, डोंट यू थिंक दैट मेक्स दैट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और डोंट यू मेक दैट मेक्स एट पॉइंट कि इंडिया के बारे में ये आता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, दे आर टफ। सो बड़ा मुश्किल आ रही है मगरब को या पर्टिकुलरली अमेरिकन को इंगेज करने में। ये चीज़ आप कैसे देखते हैं? और आप ये भी ज़रा काइंडली इस पे ज़रा पहले डिस्कस कर दीजिएगा कि क्या अमेरिकन इंडो पैसिफिक को इग्नोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे विद ऑल दीज, या कर सकते हैं इन कमिंग डेज अगर ये वॉर्स मजीद चल रही हैं? देखिए, इंडो पैसिफिक सिर्फ इंडिया की नीड नहीं है, जापान की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी, यूएसए की भी है। इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चाइना और यूएस के बीच में है, और वो है, और हमारे अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो अभी खासतौर जो एलएसी में हो रहा है वो हैं, और चाइना और जापान के जो रिलेशन है, चाइना ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो क्वाड को ड्राइव करता है। क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी कंटेंट नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन बायलेटरल सिक्योरिटी कंटेंट्स तो हमारी 2+2 है, यूएस के साथ हमारी 2+2 है, जापान के साथ हमारी 2+2, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा अच्छा है। तो देयर इज अ वेरी लूज मिक्स। अगर हम इसको देखें सिर्फ सिक्योरिटी एंगल से, तो यस यू आर राइट, द focus has shifted to Israel, focus has shifted to Russia, thing. But the strategic competition between US and China has not lessened, it has grown. अगर 15 नवंबर को शी जिनपिंग जाते हैं वहां पर एपेक मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को में, और 17 नवंबर को बाइडेन बोलते हैं वो तो डिक्टेटर है, तो आप समझ लीजिए आगे क्या होगा। मतलब दैट्स अ स्टेटमेंट which the US president made, that he's a dictator. Well, he supposedly made that. It is reported. I'm not privy to it, but that is what the media says, right? In whatever context he said it is not material. So the strategic competition between the US and China is there, as also the interdependence between the two. तो जब तक ये चलता रहेगा, फिर अभी देखिए फिलीपींस में उन्होंने बेसिस बढ़ा दिए, 5 से 9 कर दिए यूएस। So it is not that US is not. US is US Navy is patrolling the Taiwan Straits. 5 times President Biden has said categorically, if Taiwan is attacked, we will come to the defense of Taiwan. Japan has changed its laws and says that now their outreach, they can operate outside Japan also. ठीक है? So इसको अगर ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा जाए, I think Quad priority will change. Obviously, Israel will take priority because the world is divided now. I'm not even talking who's right, who's wrong. ये मेरे मतलब it is very difficult to say that. And the Americans will, of course, have to support Israel. I have no doubt support it. But that does not mean it is. And in our case, I think strategic autonomy is a must. We will continue to do what is in our interest, and we are hard bargainers. कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें. We are hard bargainers, and why not? Our national interests, our territorial integrity is not negotiable. So, sir, ये जो hard bargaining है, do you think it has evolved recently or it's been long since you have been in this? आप तो decision making में बहुत पुराने हैं. So, ये जो hard bargaining है, how it has come? क्योंकि largely कहा जाता है कि it has been seen, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इरा में देखी जाती है hard bargaining. इससे पहले तो वाशिंगटन से कॉल आती थी तो सारे पाकिस्तान के बारे में तो खैर अभी भी ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन वाशिंगटन से कॉल आती थी तो इंडिया में भी सारे जो है वो कहते थे बस गए। सो हाउ ये इज दिस रीसेंट फिनोमेनन और डू यू थिंक इट हैज इंडिया हैज अर्नड दिस पोजीशन ऑफ हार्ड बार्गेनिंग? देखिए, आई एम अ फौजी, मैं अपॉलिटिकल हूँ, लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, वी हैव ऑलवेज विल्ड इट. When I say hard bargaining, we have become overt about hard bargaining now because we are a growing power. पहले हम हार्ड बार्गेनिंग करते थे, किसने हार्ड बार्गेनिंग नहीं करी बताइए? वी हैव ऑलवेज, अगर 1974 में पहले ये नहीं करा था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, 98 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था, राइट? इट इज नॉट दैट एंड ये नहीं कि वॉशिंगटन से कॉल आ गया, वॉशिंगटन से कॉल आते रहते, बट अगेन आल्सो टेल यू 1971 वॉर, इट इज इंदिरा गांधी वॉकड अवे फ्रॉम द व्हाइट हाउस. So that was not hard bargaining. What was hard bargaining? Whether it was with China. So I'm not being political, but yes, today we didn't have the economics, you know, power that time. We didn't have the
द हार्ड बार्गेनिंग पावर एट दैट पॉइंट, इतनी नहीं थी हमारे पास, आज है हमारे पास। उस टाइम हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, वी हैड टू प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट देयर, सो द फोकस वाज गिवन, द फाउंडेशन वाज लेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड टुडे वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी कैन बार्गेन इन द वर्ल्ड, we can balance Russia Ukraine, we can also balance Israel and Hamas. If Israel is wrong, we say Israel is wrong, if Hamas is wrong, we say Hamas is wrong. पहले नहीं बोलते थे हम, पहले we were, you know, one way, but today we are taking decisions in a responsible, objective manner. So that is what hard bargaining is all about. It is not that we are not hard bargaining. अगर आप वो न्यूक्लियर डील देखें, it was struck earlier. That was also hard bargaining. हमारे हार्ड बार्गेनिंग तो हमारे ब्लड में है वैसे भी, वो तो हमारे ब्लड में है। मतलब मैंने से I also include Pakistan in that, because Pakistan is strategically very smart, and that's how it should be. You looked after your interests, whether it's Russia, US, you take name it, with China, you looked after your interests. I have no doubts about it. And very hard bargaining. Well, I remember it was General Zia who was given, I think, $3 billion. It is peanuts. That's a statement he made. I think $3 billion or $4 billion, whatever the military grant was, he said it's peanuts. So he could do that. सही कह रहे हैं। when Pakistan was working on nuclear program, तो at that time कोल्ड वार में बड़ा वो important phase था पाकिस्तान पे, तो I think the Americans were coming to one of the diplomat wrote, he is a patriotic liar. So हुसैन हक्कानी ने अपनी बुक में इसका एक चैप्टर मेंशन किया था। सो ऑब्वियसली जो भी कोई काम कर रहा था स्टेट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट उस वक्त वो सर जरूर कर रहा था। सर कमिंग टू पाकिस्तान इंडिया पे अगर बात कर लें, हाउ इंडिया इज व्यूइंग पाकिस्तान, इट इज जस्ट व्यूइंग, मैं ये थोड़े दिन पहले आपकी शायद कोई देख रहा था, एक प्रॉक्सी वॉर पे आप थे, जनरल सतीश थे, जनरल हसनैन थे, and so is India looking Pakistan still from a lens of a proxy war, or how is it in India looking Pakistan these days? We are not talking with each other, we are not communicating, lowest level पे engagement है। So India पाकिस्तान को आजकल कैसे देख रहा है कि मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि our view is blocked from Indian side and from Afghanistan side, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों हमारे व्यू ब्लॉक है। हमें नहीं पता कि अफगानिस्तान के आगे क्या हो रहा है। आजकल 15 अगस्त 2000 उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया ने अभी जैसे ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है और बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान इज आउट ऑफ ऑल दैट। सो हाउ इज इंडिया लुकिंग पाकिस्तान these days, particularly in these years? I think the best way of looking at Pakistan today is to ignore Pakistan. There's nothing wrong with it. For too long, देखिए अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो for too long we have reached out to Pakistan. Even Prime Minister Modi, who's very, everyone in Pakistan very critical of him, on his swearing-in ceremony reached out, and Nawaz Sharif, like a good statesman, he attended the swearing-in ceremony. उफा में मिले, उन्होंने कुछ किया, हमें क्या मिला उसके बाद? गुरदासपुर. He stopped on 25th December. He made a stop in to meet Nawaz Sharif in Lahore. Pathankot ho gaya. So thereafter your intelligence people came here to see that. Well, we have done our bit. The point is, I think the time. I'm not saying we are neighbors and we'll always be neighbors. I'm not saying that. But I think this is the time when the Indian government has taken a very good decision to just say pause. कब रीस्टार्ट होगा मुझे पता नहीं है। उस रीस्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा और वो हमने बता दिया क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो तो करना पड़ेगा ना। अभी इट कैनॉट बी अ वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी टू वे ट्रैफिक. We want a stable Pakistan, we want a peaceful Pakistan which is in our interest, and Pakistan has to live with India. You can't be anti-India all the time. That proxy war, bleeding India with foreign cuts, हमें कट लगे कि क्या हो गया कट का, इतना बड़ा कंट्री है। अगर 26 नवंबर हो गया तो 27 नवंबर सब बॉम्बे फिर भी चल रहा था, स्टॉक एक्सचेंज फिर भी चल रही थी। So 26 November night it happened, 27 November Bombay was normal. That is the resilience of our people, that is the resilience of our country. So to bleed India with foreign cuts is not going to be, it's not happened, it's not going to happen. But there are certain conditions to meet, and I think very right. अभी क्रिकेट तो हम खेलेंगे लेकिन सर वो अभी वो गवर्नर मलिक साहब की जो स्टेटमेंट आई थी जिसका बड़ा शोर मचा था इंडिया के अंदर, that the current political dispensation can do it anyway to win elections. सर ये भी तो एक तासुर आता है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी हाल ही में जो वाकया हुआ था, तो जो गवर्नर मलिक ने कहा था कि आपको याद होगा जो कश्मीर में थे, तो
So how do you see this? You know, he spoke that people they have been a discussion in India. तो ये भी एक तासुर पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव कि जब भी द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हैव टू विन इलेक्शंस to put something big on Pakistan or in Kashmir or on border that well. So ये एक पर्सपेक्टिव है. मैं ये इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि माजी में ऑब्वियसली that has been a policy रही है पाकिस्तान की तरफ से एक, but now the government ना तो अफोर्ड कर सकती है ना मेरा ख्याल है वो कर रहे हैं कि so it's keeping diplomatic political moral. So don't you think कि ये भी एक जो इंडिया से आवाज आई थी गवर्नर साहब की कश्मीर से, that's also one view. Pakistan has been telling the world and talking on this, and there is a voice from India as well. Yeah, one voice definitely उन्होंने बोला है कुछ, but वो उनका perspective है. मेरे हिसाब से तो if you look at the elections immediately after Balakot strikes, Bihar was lost. So it is not, and I don't think the BJP government needs Pakistan to win elections. जब तक राहुल गांधी है बहुत है. Yes, that's not a bad point. No, it is in the lighter vein. But the fact is, it doesn't need Pakistan. There are state elections where BJP has lost elections. They lost Maharashtra also. They lost Rajasthan also last time. They lost Maharashtra, Madhya Pradesh last time. They lost Haryana last time when they came back. They lost, of all the states, they lost Himachal Pradesh this time. तो इसका ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखिए, द इंडियन वोटर इज वेरी डिसर्निंग वोटर. मतलब इमोशंस असाइड, इमोशंस इज ऑन द मीडिया, लेकिन जब वो वोट करने की बारी आती है, इट्स अ वेरी डिसर्निंग वोट. ओडिशा आज तक नहीं जीते, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, these also states. Why don't Kerala? Why don't look at them? We only look at the heartland, UP. UP is only one state. Yeah. It is not that way. If you look at the Indian democracy, अगर 2014 में BJP government under Mr. Modi had landslide victory, and 2015 lost 59 out of 60 seats in Delhi to a small party, Aam Aadmi Party. So that is India. That is Indian democracy. So I don't think Pakistan के नाम पे कोई वोट हो सकता है 1%, but that is not a major issue. Major issue in the end, what will the government do for me, for my society, for my people? अगर मैं जाके सिर्फ पाकिस्तान करता रहूंगा, लोग बोले तू जा पाकिस्तान यार, हमको तो सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको घर चाहिए. We need governance, we need administration. 5 साल के मतलब कितना पाकिस्तान कर लेंगे? आधा टाइम कर लिया, एक बार ही कर लिया, मतलब you can't repeat your this. I'm sorry, I don't agree with it at all. Mr. Malik must have said whatever he said. I also heard him, but I don't agree with it at all. Totally. बिल्कुल ठीक है सर. नहीं सर, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बल्कि मेरी अपनी जाती ओपिनियन भी इसमें यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दिस टाइम इज कमिंग विद अ डिफरेंट प्लान. ग्लोबल स्टेचर इंडिया का, इंडिया इज रेलिवेंट, इकोनॉमी बेहतर है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, देयर इज सो मच. लेकिन वो कई लोग कहते हैं आखिर में जरा पाकिस्तान का तड़का लगा दो तो माहौल अच्छा और हो जाता है, क्योंकि आपने वो वोट विनिंग क्लॉज जरा थोड़ा बन जाता है, इलेक्शन में माहौल बन जाता है. मजे की बात बताऊं कि बिकॉज आपको पता है मैं कभी कभी इंडियन मीडिया पे आता हूं, तो व्हेन कभी इंडिया चाइना के बॉर्डर क्लैशेस होते थे, सो द इंडियन मीडिया वोंट फाइंड अ चाइनीज एनालिस्ट, सो वो हमें बिठा लेते हैं, तो और हमें बैचिंग करेंगे, ओए तुसी चाइना के यार हो. I was with you a few times. तो वो हमें बिठा लेंगे, आप चाइना के दोस्त हैं, you are China's best friend, आए आपके साथ लड़ते हैं. So I can understand, मतलब just that is there to build the opinion. But obviously you are absolutely right कि it's not about आप कोई 5 साल पाकिस्तान करके लोगों को you can't win it. And I think India is so big, absolutely right. और India is so much to celebrate on its own, particularly ये जो सारी being the 5th largest economy, being so much relevant globally, diaspora, अभी इतना कुछ I2U2, ये बड़ी चीज़ें हुई हैं. So I think ये जो international stature बढ़ा है, in my personal understanding, and I have been commenting on myself as well, कि ये because of the hard work of Indians, ये जो है वो we need both objective and analytical people like you to talk about it. just in the end we have to live together. मतलब ये तो कोई शक नहीं है इस चीज में. मतलब we have to stay together, we have to grow together. Yes sir, बिल्कुल ऐसा ही. And I think the moment we do that, it will be beneficial to both countries. Obviously sir, It is a well-being of people. मतलब आप छोटा देश थोड़ी, Pakistan very big country.
Yes, sir. 22 crore people is not easy. मतलब कहाँ है 22 crore people इस दुनिया में? I think if Yes, not say you're ninth largest country in the world. I think 6th or 7th, I think. The population wise, maybe Yeah, that is 240 million के करीबन 230 22 मैं बोल रहा हूँ, पुरानी मेरी फिगर्स हो गई हैं, थोड़ी मैं बुढ़ा हो गया। नहीं, That, no, what is the end aim? End in the well-being of the people. yes, sir. मतलब True. हम मतलब वो मतलब ये politicians तो चलते रहेंगे हर एक जगह, but the end is the well-being of the people, and then for that, I suppose we have to grow together. We are a bigger country, so we have a bigger problems. सही And कहा। Pakistan is only one part of the problem. It's not a problem. ऐसे मतलब जो पाकिस्तान की हमारी एक ये आप ये टेररिज्म को बंद कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली ये एक कंपीटिंग पर्सपेक्टिव से दोनों तरफ से, लेकिन लेट्स होप के आपने कहा कि आई हैव दिस, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया के ये माइंडसेट है कि जस्ट इग्नोर पाकिस्तान। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट गोज एंड हाउ चीजें कैसे मूव करती हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल हैव टू बिल्ड। Let us look at the positives. We had this composite basket of 8 things, 2003 to 2008, जब तक मुंबई नहीं था। इतना अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था, CBMs चल रहे थे, इतने अच्छा सब कुछ चल रहा था। My own meeting with my counterpart, my talk to him, it was so positive. मैं उनसे जनामर so positive. उन्होंने मुझे बुलाया वागा में, मैं उनसे मिला, and we could understand each other. So it is not that there are so many things we can do in common. बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। और लेट्स होप कि दोबारा बातें हों, दोबारा डिस्कशंस I हों। hope so. Yes, sir. No, होंगी इंशाल्लाह. It will take some time. Things will move on. Thank you very much, Lieutenant General Vinod Bhatia sir. It's a pleasure talking to you, sir. Thank you, Dr. Cheema. Always, it's always good to be on. Somebody heart to heart बात होती है, analysis anecdotal भी होती है, और बहुत अच्छा लगता है. Thank you very much. Thank you very much for watching.